चाहिए। तुलसी वृंदावन भले उसको प्रणाम करना जरूरी है, उसकी उपासना करना जरूरी है, लेकिन दिस इज नॉट द डायरेक्शन वेयर यू शुड पुट तुलसी वृंदावन। तो नॉट सच ए हेवी वन। यस, तो जहाँ हेवी होना चाहिए उसको, वहाँ उसको मैंने पोजीशन किया। ये पीठ जो बनाया था साउथ में, उसको रिपोजिशन किया। अच्छा। और फिर ये फैक्ट्री चालू हो गई। अच्छा, चालू हो गई। So basically you did this changes where appropriately the well should be there, the Tulsi Vrindavan, etc. And then the factory started. Yes. I have a question to ask you. I know I'm taking a lot of your time, I know you got to go, but last question probably, or unless you have more time, is sometimes people have problems in money. पैसा नहीं आ रहा घर में. Yes. No income, no job, nothing. Okay. Or bad name, some scandal or something like that, okay, due to money or whatever, you know. So can we see this via north-east direction? Definitely. Because second house will be that, okay. So, or maybe somebody is not getting a job, so it will be west, north, west, sixth house, you know. So can we, do you have an example, something like that? अभी जैसे अभी तक हम लोगों ने बात की, हम लोगों ने ऐसे ये किया कि जो चार्ट है, नाताल चार्ट है, उसके हिसाब से वास्तु कैसी होगी उसके इमेजिन करने की कोशिश की। एक उल्टा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि वास्तु देख के हम लोग चार्ट के बारे में बात कर सकते हैं। Okay, so you are saying look at the vastu and predict how the natal horoscope will be. How the natal, वो कोशिश करते हैं। मैं ऐसे क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि 100% मैं बोल पाऊंगा, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं, क्योंकि ये अगर एक दूसरे से लिंक है, मुझे ये मालूम है तो मैं ये ढूंढ रहा हूँ, अगर मुझे ये मालूम है तो मुझे ये भी ढूंढने को आना चाहिए, ऐसे मेरी सोच है। तो एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको कि मालवण में मुझे एक स्टूडेंट मुझे लेके गया था कि उधर उनका एक रिलेटिव था और उधर वो मालवण कॉरपोरेशन में सिविल में था, मतलब वहाँ 1 नंबर के जैसा 2 नंबर का भी ये होता था। तो उनका घर देखने के लिए वो मुझे लेके गए थे। तो जैसे ही हम लोग मालवण पहुंचे, उनके घर जाने लगा तो मैंने देखा कि उनका खुद का बंगलो था, मतलब मालवण की बिग जेट। तो उनका जो घर था तो उसका जो एंट्रेंस है, बंगलो का एंट्रेंस है, उसके सामने इलेक्ट्रिक पोल था। ओके, राइट इन फ्रंट ऑफ द एंट्रेंस। और जो कि वास्तु में नहीं कहा गया है, उसको कहा इसका द्वार वेद करके बोला है कि कोई द्वार के सामने ऐसी कुछ चीज होना, वो द्वार वेद करके बोला गया है। मतलब वो अच्छा नहीं, वेद बोलेगा तो वो आपको तकलीफ देने वाला है। तो मैंने सोचा मतलब कुछ ना कुछ तो इसमें ये जो वो इलेक्ट्रिक पोल है उसका रोल इसमें कुछ होगा। तो बाद में जैसे मैं वास्तु ऑब्जर्व कर रहा था, वास्तु के सेंटर में ब्रह्मस्थान में खड़े रह के मैंने जैसे देखा तो मुझे समझ में आया कि ये जो उनका जो गेट है, मेन गेट है, वो आ रहा है नॉर्थ ईस्ट में। तो नॉर्थ ईस्ट के सामने इलेक्ट्रिक का पोल होना, तो वास्तु शास्त्र में ऐसे बताया गया है कि बदनामी, मतलब आपका नाम खराब होगा। तो नॉर्थ ईस्ट जो आता है हमारी कुंडली में कहाँ आता है? सेकंड हाउस, सेकंड एंड थर्ड हाउस में आता है। अभी मुझे वो आदमी मुझे जैसे कहा कि कर्म का ही फल हमको मिलना है, तो कर्म क्या कर रहा है? वो सिविल में है, कॉर्पोरेशन में सिविल में है, और जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि वहाँ 2 नंबर का व्यवहार होता है, तो इसका नाम खराब होने वाला है। और वो पैसे की वजह से मतलब पैसे, अब अगर आप प्रॉपरली पैसा लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप ब्राइब लेते हो तो वो गलत है। तो कोई प्यार से आपको ब्राइब नहीं देगा, वो आपको आप खींच के ले रहे हो। तो खींचने वाला जो है वो मार्स है, खींचने वाला जो है वो मार्स है, और उसका दोष आपको लगने वाला है कि अगर ऐसे आप किसी का पैसा खींच रहे हो तो उसका दोष लगेगा कि नहीं आपको, उसकी हाय लगेगी आपको, बराबर। तो मैंने ऐसे सोचा कि ये जो है, तो ऐसे हो सकता है ये जो ओनर है ये बंगलो का, इसका ऐसे हो सकता है कि मार्स 8th हाउस लॉर्ड होके सेकंड हाउस में आएगा, तो ये दोष आ सकता है। और जैसे हम लोगों ने उनकी होरोस्कोप देखी तो उनका कन्या लग्न और तूड़ मंगल था। मतलब कन्या लग्न अगर देखेंगे तो मार्स होता है 8th हाउस लॉर्ड, और वो तूड़ राशि में मतलब द्वितीय स्थान में सेकंड हाउस में जाके बैठा है। और जैसे जैसे हम लोगों की बात बढ़ती गई तो बाद में यही मालूम हुआ कि वो इसी की वजह से कंट्रोवर्सी में आए हुए हैं। Okay, but he was caught taking bribe and bad name followed. Yes. तो ये मैंने ना तो पहले उनकी होरोस्कोप देखी थी, ना उनकी ये हिस्ट्री मुझे मालूम थी। तो जैसे मैं वास्तु ऑब्जर्व कर रहा था तो ऐसे सोचा कि अगर ऐसी वास्तु है तो इनकी कुंडली कैसी होगी।
तो ऐसे ऐसे होने की चांसेस है करके मुझे लगा, तो फिर जैसे कुंडली देखा तो इट कम्स ट्रू। Okay, I'll explain it to you. This thing. What sir said, कि now let's take the reverse logic. Okay, let's see the Vastu and construct the horoscope, or try to think what kind of combinations can be there in the horoscope for such a Vastu owner. For such a Vastu owner. So he had gone somewhere in Malvar, and it was of a government official working in a civil operation over there. Okay, when he entered that house, okay, he saw in the northeast, the door was in the northeast. Yes, main gate. Main gate was in the northeast, huge bungalow it was in the northeast. And right opposite that, right in front of it, there was an electric pole. Right in front of the gate. Yes. Okay, there was an electric pole. So that in Vastu is called Dwar Ved. Dwar Ved. Means door, Ved means obstruction, door, obstruction to the door. And in Vastu the main entrance is very important. Yes, yes. Very important. So he felt, because, and that the result of that, the result of Dwar Ved is Badnami, which is bad name, okay, or scandals or something like that. Okay. So he felt that this एक मिनट सुनिए, द्वार वेद का हर टाइम ये रिजल्ट बदनामी ही नहीं है, अलग अलग बताए गए हैं, लेकिन उसमें अच्छा कुछ भी नहीं है, सब बुरा ही है। अभी ये बदनामी क्यों है वो आप आगे बोलोगे। So Dwarved, the results are, what's the corrected word? Dwarved, the results are varied. One of them is scandal or bad name. Okay. So what he found, what he thought, what Sunil Gesaji thought, okay, was this native, okay, as he started talking and he realized that this native could be indulging in taking bribe, because he's a government official, taking bribe, and because when you're taking bribe, nobody is giving bribe out of free will, okay, so this person is snatching, and that is an act of Mars, okay, so he felt this native could have Mars in the second house, okay, or because it is the northeast section, Dwar Ved or the obstruction is there in the northeast, so that will be something to do in the second house he should have. And 8th house is the house of scandals, Badnami, you know. So when he saw the horoscope, he found the combination exactly like that. It was Virgo Lagna, 8th Lord Mars was in the second house, and in discussion with the client, they realized that this person had been caught taking bribe. So the fault in the Vastu and the fault in the horoscope, okay, is what matched. What I always feel, sir, okay, this is what I have observed. You look at a person's horoscope, in his horoscope you will be able to predict the Vastu, the good Vastu and the bad Vastu. Now suppose in my horoscope, sir sees, he will see, okay, these are the good points in Vastu, this person will have, and these are the bad points in Vastu, this person will have. Somebody had told me, for example, Sun, Mercury together in the 11th house, okay, near your house, there should be, for such a native, there should be a school, okay. This one combination is observed. I think it was Dawal or something, Dawal Kandya. So, you also see the negative aspects of Vastu in a horoscope. As your journey in life goes on, when your good time is coming, that is the time when you get a house with the good Vastu. Yeah. When your bad time is coming, you will incidentally shift and you will get a house with exactly matching that bad Vastu as seen in your horoscope. Yes. You know? Yes. As seen in your horoscope. Yes. So when the timing matches of Vastu and your horoscope and Dasha, you know, that's when you can make out. I mean, this is what I feel, what I have observed with my very limited knowledge of Vastu and Astro Vastu. नहीं, जैसे कि अभी ये सेशन एंड कर रहे हैं, जैसे शुरू में हम लोगों ने कहा था कि अगर जन्म से लेके मृत्यु तक सभी घटनाएं मेरे चार्ट से जुड़ी हुई है, तो ये वास्तु उसका एक भाग है, तो वो भी चार्ट से ही जुड़ा होना चाहिए। तो अगर मेरी 4th हाउस अच्छा है तो मुझे अच्छी वास्तु मिलनी चाहिए, अगर बुरा है, और ऐसे नहीं है कि एक हम लोग क्लियर करते हैं कि कोई भी वास्तु
100% एक्यूरेट हो नहीं पाती। कोई कितना भी ये हो, वास्तुशास्त्र तज्ञ हो, एक्सपर्ट हो, वो 100% शास्त्र के हिसाब से वास्तु नहीं बना पाएगा। मतलब वो ऐसे हम लोग बोलते हैं स्वप्न है वो, ड्रीम है वो, कि 100% वाला। और दूसरी बात एक मैं ये करना चाहता हूँ कि अगर ऐसे समझो ऐसे हो कि मैक्सिमम इससे एक्यूरेट मैंने वास्तु बनाई, तो ऐसे हो सकता है क्या कि मेरे सब वरीज खत्म हुए? अगर ऐसे हो सकता है तो मुकेश अंबानी को कुछ भी नहीं वरीज होगी, वो तो हर रोज नई वास्तु में जा सकता है। लेकिन वैसे नहीं है, हमारी वरीज हमारे लेवल पे है, उनकी वरीज उनके लेवल पे है। शास्त्र की मदद से हम लोग सिर्फ ये कह सकते हैं कि विथ मिनिमम एफर्ट्स मैक्सिमम ईल्ड। Sir, also, I just wanted to quickly, before we end the session, each planet has a direction. Yeah, okay. Can you list out those directions for us? Sure. कि जो डायरेक्शंस बताई गई है कि सन की जो डायरेक्शन है वो ईस्ट है, वीनस की जो डायरेक्शन है वो साउथ ईस्ट है, मार्स की जो डायरेक्शन है वो साउथ है, राहु केतु की जो डायरेक्शन है वो साउथ वेस्ट है, सैटर्न की जो डायरेक्शन है वो वेस्ट है, मून की जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ वेस्ट है, मून की जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ वेस्ट है, मर्क्यूरी की जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ है, और जुपिटर की डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ ईस्ट है। We'll be continuing this session with sir. In February we are planning to do a workshop on Astro Vastu. Okay, so stay tuned on this channel. We're going to bring sir again with some more tips on Astro Vastu, some more examples on Astro Vastu, how to use it, etc. Okay, and all of you are most welcome for a workshop on Astro Vastu in February. But I'd like to end this note, okay, with a research point that was given to me by somebody in Chandigarh. एक थोड़ा ये करता हूँ कि जो वास्तु पुरुष का जो चार्ट बताया गया है कि कैसे, मतलब ये यहाँ क्यों है और ये वहाँ क्यों है, तो वास्तु के हिसाब में जो एकाशीति पद वास्तु पुरुष मंडल किया गया है, तो वहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में जो जिसके लिए कहा गया है ना, वो घर की जो कुंवारी लड़कियां हैं उनको रहने के लिए कहा गया है। और वेस्ट जो है, मतलब वेस्ट का जो तत्व है वो वायु है और जल है, और नॉर्थ वेस्ट का जो तत्व है वो जल है और वायु है। मतलब नॉर्थ वेस्ट में पहला जल है और बाद में वायु है, और वेस्ट में पहले वायु है और बाद में जल है। एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि समझो मेरी इंडस्ट्री है, तो जो फाइनल प्रोडक्ट है वो वास्तुशास्त्र में वेस्ट के वो यहाँ रखने के लिए कहा है। तो जो हमारी क्या ये रहती है, कोशिश रहती है कि जो प्रोडक्ट बन गया है वो जल्दी से जल्दी बाहर हो जाना चाहिए, गेट के बाहर हो जाना चाहिए। हम लोग लिटरली उसको धकेल देते हैं और लिखते हैं कि वन सोल्ड हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बराबर। मतलब हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई, हमारी कोई बाइंडिंग नहीं है, तो वो वायु तत्व का काम हो गया। मतलब वो पहले हम लोग बाहर भेजते हैं, फिर उससे सुख पाते हैं कि वो बाहर गया करके ना हो। और जो कुंवारी लड़कियां हमारे घर में, उनको नॉर्थ वेस्ट में रखने के लिए जो कहा गया है, वहाँ उनके बारे में हम लोग क्या सोचते हैं? उनके बारे में हम लोग यही सोचते हैं कि इनको भी हमें विदा करना है, लेकिन हम प्यार से उनको विदा करते हैं कि वो रिलेशन बंधा रहे, वो वापस आना चाहिए। तो ये तत्व वास्तु से, जैसे हम लोग एस्ट्रोलॉजी में तत्व देखते हैं, वैसे पूरा तत्व वास्तुशास्त्र मेरे हिसाब से तत्व से भरा हुआ है। ओके। मतलब दोनों भी एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, वो बाहर ही जा रहे हैं, हाँ। लेकिन एक को हम लोग फोर्सिबली बाहर धकेल रहे हैं और दूसरे को प्यार से विदा कर रहे हैं। ओके। This is a very important point you said. West, okay, the west direction of your house, okay, the tattva is Vayu plus Jal. Vayu plus Jal. Yes. So the last part is Vayu or the first? First part is Vayu and then Jal. Okay. So Vayu means air, Jala means water. So the first part is air and the last part is water. So when you are doing an industry, you have an industry, factory, you have finished products. So you want to keep it in the west side of the factory. Yes. So that you can. It is told in the Shastra, it should be kept in the west. It should be kept in the west. So that your finished products. I'm just giving reasoning why it should be kept in the west. Okay. So he's saying the reasoning is the finished product, you want to sell it but you don't want it back. It's like once sold, once we don't sold, we don't take it yes. back. So that is the air part of it, because the first part is air. Yes. Now again the Shastra says that
unmarried girls, okay, if you want to get married in your house, should be located, they should stay in the northwest. वहाँ northwest section. वहाँ जल first है. There, the first priority is water. The tattva, the element, is water, happiness. Okay, and the second is rivers, air. Yes. Okay, so you want to let go of them, no doubt. Okay, but you want to let go of them by marrying them off. But at the same time, you want to maintain relationships. So प्यार से वापस आनी चाहिए. Yeah. So this is the water part, the emotional. जैसे वो बाहर जाती है, हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी से हाथ नहीं मोड़ते, हम लोग बोलते हैं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. Right. So that is how he's telling how tattvas are so important in Vastu, which is a very unique point. Most people don't talk about tattvas. Yes. रुद्र जय कंपार्टमेंट जो एकाशीतिपद वास्तु पुरुष मंडल में रुद्र जय में वो कुंवारी लड़की को रहने के लिए कहा है. Okay. That's fantastic. Guys, I'll leave it with a research. I want your response on this. Somebody should study this really well. The reason I asked her, okay, on the directions of each planet is, this is what a gentleman from Chandigarh, I'm forgetting his name now, Delhi or Chandigarh he is. I was in touch with him a year back, and he gave me a great hint, which somebody else had also told me about, but now I remember him. He said, let's assume you are having a malefic planet's dasha. Say you are having Rahu dasha, okay, or Rahu Antar dasha, but it is badly spoiled Rahu. Then he said, this is what he's also observed, is you check the direction that Rahu signifies, which is south-west. Yes. Okay? South-west is what Rahu signifies. That direction in your office or home will be spoiled and will be creating the major problem. Point is, most of us who are doing Vastu, we do so many changes. And say, oh my God, he did so many changes, but there was nothing great effect. Okay? But this is like the main problem. Is, he says, see your dasha from your horoscope. See your dasha. Say for example, as I said, it is Rahu dasha or Rahu Antar dasha. And you're going through problems. If you're going through problems, malefic, extremely malefic, then check the southwest corner. That corner has gotten activated. Many a times in my Facebook group I have mentioned that people do not know how to see activation. When will a corner in your house get activated? A direction in your house get activated? Okay, this is one big hint I have given. It has many layers. Okay, I am combining what that guy said, what I have seen. Okay, I have seen it recently in many cases. Okay, bad dasha, that corner, I tell them on the phone, check in that corner if there is clutter. And they'll say, oh, the clutter's always been there. I'll say, just remove it and see. And it will not be a major clutter. Clutter means जो हम लोग ऐसा बहुत ऐसा खबड़ी करके रख देते हैं, कुछ clean नहीं रखते हैं. That is where the problem. Scrap material. और घर एकदम बराबर साफ नहीं रखा, एक कोने में habit हो जाता है, एक कोने में dump कर दिया. शास्त्रों में उसको अपरिग्रह बोलते हैं. परिग्रह मतलब जो चीज नहीं चाहिए वो जमा करके रखिए. या जो चीज चाहिए भी, लेकिन हम उसको systematically नहीं रखते. We want those things maybe, but we are not keeping it organized, clean. Dust coming over there or whatever, like throwing papers, newspapers in a corner, and especially blocking corners can be harmful at times. Blocking corners can be harmful at times. I've seen this working. I want you all to test it. See if this is happening in your house or in your friend's house or whatever, and report back under the comment section. Okay. Thank you so much. Thank you so much. Yes, sir. It's a pleasure always. Thank you.